Very good afternoon to all of you. Welcome to the social science class. Today we are going to continue our chapter minerals and power resources, and today we are going to complete this chapter. We will discuss about the geothermal energy, tidal energy, and biogas. Okay. So first of all, geothermal energy. What is geothermal energy? Geo, as you all know, हमने क्लास 6 में ही जियो का मीनिंग समझ लिया था. समथिंग विच इज मतलब अर्थ को बोलते हैं जियो. ठीक है. अर्थ की थर्मल, इट्स लाइक हीट. थर्मल को हीट बोलते हैं. सो अर्थ हीट, जियोथर्मल का मीनिंग क्या होता है? अर्थ हीट. So heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. हीट एनर्जी, जो हम अर्थ की जो हीट एनर्जी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं. अर्थ से जो हम हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, हम लेते हैं, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं, अर्थ के अंदर मतलब अर्थ के नीचे जाते हैं, इंटीरियर में देखते हैं, तो वैसे वैसे वहां का जो टेम्परेचर है उतना ही क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है. ठीक है. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot spring. कभी कभी ये जो हीट एनर्जी है हॉट स्प्रिंग्स की तरह भी निकल के आती है, सरफेस तक निकल के आ जाती है. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर. ये जो हीट एनर्जी जो हॉट स्प्रिंग्स की तरह सरफेस में आ जाती है, हम इस हीट एनर्जी को पावर जनरेट करने के लिए यूज ले लेते हैं. ठीक है. Now geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, heating and bathing for several years. जियोथर्मल एनर्जी को हमने किस किस चीजों में, जो हॉट स्प्रिंग की तरह निकल के आई है अर्थ के नीचे से, जो आपकी एनर्जी हीट एनर्जी निकल के आ रही है हॉट स्प्रिंग के जरिए, उसका हम कुकिंग, बाथिंग और हीटिंग में बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं. USA has the world's largest geothermal plants. USA में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट है, followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. मतलब उसके बाद और कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का यूज होता है? न्यूजीलैंड में, आइसलैंड में, फिलीपींस में, सेंट्रल अमेरिका में यहाँ पे यूज होता है. ठीक है. जियोथर्मल पावर प्लांट्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड हैं और लगे हुए हैं, और ये कंट्रीज यूज भी करती है जियोथर्मल एनर्जी. In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Kuga Valley in Ladakh. Geothermal energy इंडिया में कहाँ पे geothermal plants located है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में. ठीक है. And Kuga Valley in Ladakh, लद्दाख के कुगा वैली में located है. ये देखिए, ये आपके फिगर गिवन है बुक में भी. ये जो ए फिगर है वो क्या है? जियोथर्मल एनर्जी मणिकरण. मणिकरण में जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हुए, ये जो धुआं सा देख रहे हो, ये अर्थ की हीट है, अर्थ के नीचे से हीट निकलते हुए आ रही है. और ये बी जो है, कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी. ये देखिए, यहाँ पे यूटेंसिल्स पड़े हैं, ये पानी पड़ा है यहाँ पे, और ये देखिए ये कपड़ा ढका हुआ है ना, ये यूटेंसिल्स में कुछ खाना रखा हुआ होगा और उसको ढका हुआ है. ये क्या हो रहा है? जियोथर्मल एनर्जी के हेल्प से फूड को कुक कर रहे हैं. ठीक है. नाउ इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी की. जस्ट वॉच द वीडियो केयरफुली. Geothermal. Geothermal refers to producing energy from the internal heat. The internal heat of the Earth is generated from radioactive decay of minerals and continual heat loss from the Earth's original formation. Geothermal wells are drilled into the Earth's crust at approximately a depth of 3 to 10 kilometers. The heat is extracted with a variety of methods, but in most cases is drawn from the Earth using water and steam.
Hot water from the earth may be directly extracted to heat homes and buildings. This is done either by directly circulating the hot water through buildings or by pumping it through a heat exchanger that transfers the heat to the building. Geothermal heat can also be used to produce electricity in a geothermal power plant. Electricity is generated when geothermal heat produces steam that turns turbines on a generator. The major regions of geothermal development are in the most volcanically and tectonically active regions of the world. Though geothermal energy is currently a small player in the world's energy mix, one of its key advantages is its reliability and consistent power generation, which means it can provide baseload electricity. Concerns with geothermal include the accidental release of CO2 and hydrogen sulfide emissions stored in the Earth's groundwater that is often used to carry geothermal heat to the Earth's surface. Additionally, drawing heat from the Earth's crust can, if done irresponsibly, lower the ground temperature below the surface. The upfront costs for geothermal energy production are relatively high. It is expensive to carry out the seismic sensing, test well drilling, confirmation testing, and other necessary preliminary investigations to ensure that your new geothermal plant will be capable of meeting desired production. That's geothermal. Now class, I hope this is clear to you all what is geothermal energy. अगर किसी को समझ नहीं आया है तो please do ask me. Now our next energy is, now this is first of all, this is the figure which is given in your book of the geothermal energy. Just look at this. This is the interior of the earth. ठीक है, this is the water level. वेल है, यहाँ पे ये वाटर है, ये देखिए ये नेचुरली जो स्टीम आ रही है, वो सारी चीजें हैं, नेचुरल फैक्ट है अर्थ का, ठीक है। पानी और वेल और वाटर, ठीक है, ये अर्थ की जो हीट, यहाँ से नीचे से जो अर्थ की हीट है यहाँ पे पानी को गर्म करती है और यहाँ से हम पानी को लेके पानी टरबाइन और जनरेटर को हमने कनेक्ट कर रखा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। दिस इज द फिगर ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी। Now next is tidal energy. Tidal समुद्र की जो वेव्स हैं, ठीक है, उससे एनर्जी को क्रिएट करना। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, ठीक है। अगर जो हम समुद्र से जो टाइड्स आती हैं उससे जब हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। Tidal energy can be harnessed by building dams at narrow of sea. Tidal energy को हम कैसे जनरेट करवा सकते हैं? Tidal energy को हम जनरेट करवा सकते हैं हम सी के आसपास, ठीक है, उसके नैरो डैम्स को बिल्ड कर सकते हैं और वहां से हम टाइडल एनर्जी जनरेट करवा सकते हैं। उस डैम से हम क्या कर सकते हैं? उस डैम से हम टरबाइन्स और जनरेटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और आफ्टर दैट हम इलेक्ट्रिसिटी और पावर को जनरेट कर सकते हैं। During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. जब समुद्र का जो पानी का लेवल जब ऊपर आता है, टाइड्स बहुत ज्यादा हाई टाइड्स होती है, जब सी लेवल बहुत ऊपर आता है उस टाइम पे जो एनर्जी होती है टाइड्स की, वो क्या करती है? टरबाइन को ऑन कर देती है, टरबाइन को इंस्टॉल कर देती है, ठीक है। जो भी इंस्टॉल्ड हुआ होता है डैम में टरबाइन, उसको स्टार्ट कर देती है और उससे फिर जनरेटर में जाके आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जनरेट होती है, ठीक है। नाउ दिस इज द फिगर। लो टाइडल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लो टाइडल एनर्जी को अभी यूज लेते हैं। दिस इज द हाई टाइड, ठीक है। टाइड आती है, टरबाइन अपने आप ऑन हो जाता है और इससे जनरेटर भी ऑन होता है और फिर हम पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है। लो टाइड के टाइम पे भी हो सकता है, लो टाइड के टाइम पे भी जो टाइड्स धीरे धीरे तो टरबाइन चलेगा ही,
तो जो टरबाइन चलेगा तो जनरेटर भी चलेगा और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. Russia, France, and the Gulf of Kutch in India have huge tidal mill farms. रशिया में, फ्रांस में और इंडिया में गल्फ ऑफ रन ऑफ कच्छ सुना है गुजरात में. गल्फ ऑफ कच्छ में बहुत बड़ी बड़ी टाइडल मिल फार्म्स बने हुए हैं. Now, the first tidal energy station was built in France. पहला tidal energy station कहाँ पे build हुआ था? फ्रांस में build हुआ था. Now, एक tidal energy से related हम एक वीडियो देखते हैं. Just watch the video carefully. Renewable energy is energy that is replenished by nature so that it can be used over and over again. Tidal energy is produced by the surge of ocean waters during the rise and fall of the tides. The world's oceans are extremely powerful and the tides are no different. With tidal energy, we can harness some of this vast energy from the changing tides and tidal currents. The gravity between the moon, the earth and the sun combine to move the tides in and out. The tides change at predictable times linked to the cycle of the moon. In some parts of the world, the speed and the difference in height of the tides is greater because of the local geography and the earth's tilt. By placing devices that harness some of the tidal energy in these narrow channels, we can generate electricity that can power communities and contribute to the power requirements of towns and cities. With global warming becoming a greater concern, it is our job to find alternative ways to provide energy, ways that are more available and sustainable than fossil fuels. Tidal energy can play a big part in the solution, as it is renewable, predictable, and if combined with storage, highly flexible. Okay, I hope this is clear to you all. Tidal energy. Next energy is biogas energy. Organic waste such as dead plant and animal materials, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि मरे प्लांट्स जो मर जाते हैं, एनिमल्स के मटेरियल्स या फिर एनिमल डंग और जो हमारा किचन वेस्ट है उसको भी हम गैसियस फ्यूल को में कन्वर्ट करके, ठीक है, उसको गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसे हम बायोगैस बोलते हैं और उससे भी हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं. The organic waste is decomposed by bacteria in biogas digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ये डेड प्लांट, एनिमल्स, एनिमल मटेरियल्स, डंग, ये काउ डंग वगैरह या एनिमल डंग्स वगैरह, ये डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, इन वेस्ट को डिकम्पोज होते हैं और जब ये बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक ये मिक्सचर बन जाता है. किस चीज का मिक्सचर बन जाता है? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस हैं. इन दो गैसेस में ये जो मिक्सचर है क्या करता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स बन जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है. बायोगैस इज एन excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure each year. बायोगैस जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट फ्यूल है. किस चीज के लिए? कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, और ये बहुत ही ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर्स या मैन्योर जो यूज करते हैं वो मैन्योर बायोगैस जो है हर साल बहुत अच्छे अमाउंट में यूज करता है और अच्छे अमाउंट में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. Energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. अब आपने देखा हम बायोगैस से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी से भी कर सकते हैं, सोलर एनर्जी से भी कर सकते हैं, जियोथर्मल से भी कर सकते हैं, अर्थ की हीट वेव से, ठीक है, न्यूक्लियर एटम से भी कर सकते हैं.
एनर्जी हर जगह है, बट उनको उनमें से एनर्जी को निकालना बहुत कॉस्टली भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी, इसलिए बोला जाता है प्लीज सेव द एनर्जी। ठीक है, आपको बोलते हैं अगर एनर्जी यूज नहीं कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हो, तो स्विच ऑफ कीजिए लाइट, स्विच जब कोई कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हो या रात को मोबाइल आप यूज नहीं करते हो, तो प्लीज अपना नेट कार्ड बंद रखिए। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। आपको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है, अभी जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आई मीन टू से कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करते हुए अभी मोस्टली एनर्जी को यूज करते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी या बायोगैस या जियोथर्मल जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के, जिससे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता, वो उसे सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए आज की डेट में हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स थर्मल पावर प्लांट का यूज करते हुए ले रहे हैं। So please everybody, this is all about minerals and energy resources. Uh, दिस इज अ स्मॉल फिगर ऑफ बायोगैस आल्सो। देखिए ये गैस टैंक है, ठीक है। सॉइल, इसमें सॉइल जितना भी स्लरी, स्लरी व्हाट इज स्लरी, जितना भी आपका ये बोलते हैं ना कि वेस्ट होता है, मेन्योर हो, ये सॉरी काउ डंग हो गया या एनिमल डंग हो गया, एनिमल मटेरियल्स, प्लांट, ये सब इसमें डालते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस टैंक है, इससे बहुत टाइम तक ये सारी मटेरियल्स जो है सड़ते 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 एक मिथाइल और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, उससे मेन्योर भी बनता है। मेन्योर हम फर्टिलाइजर के लिए यूज कर सकते हैं, और वो जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम कुकिंग और लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल आल्सो सी वीडियो रिलेटेड टू बायोगैस आल्सो, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। When you think of biogas, you may be thinking Yes, please watch the biogas. video carefully. When you think of biogas, you may be thinking about this. Well, it's not only that. Biogas comes from all types of organic waste, from agricultural waste such as vegetable waste, manure, and cereal dust, industrial byproducts such as sludge, fats, and peelings, and urban waste that usually consists of green waste and household waste from homes and supermarkets. This organic matter is then collected, sorted, and placed in an anaerobic digester where it is mixed and heated. During the fermentation, the bacterial action transforms the organic matter into biogas. This process is called anaerobic digestion. Once purified and controlled, the biogas can be injected into the district gas network for cooking, heating, and hot water purposes. The biogas is a circular energy, but that's not all. Indeed, due to its cogenerative qualities, biogas can also provide heating and electricity. At Grande Auche, Dalkia provides energy for an animal feed factory with the annual consumption of the equivalent to 3,470 persons. Nothing is lost, everything is transformed. Now I think this topic is clear to you all. Anybody have any doubt regarding this chapter? You can ask me. Please start your videos, everybody. Yes. Anybody have any doubt? You can ask me. You can raise your hands. You can ask me questions. You can ask me doubts. Everybody, please start your video also. Nobody have no doubt?
Everything is clear to you all? अच्छा बेटा, कल हम पीडीएफ इस चैप्टर की पीडीएफ डिस्कस करने वाले हैं, और आपका अभी आप सब गूगल फॉर्म के थ्रू एग्जाम दे रहे हो, राइट? अब आपको आइडिया हो ही गया होगा गूगल फॉर्म के थ्रू हम एग्जाम कैसे दे सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, जो आपका थर्सडे को टेस्ट होने वाला है और आपका जो फ्राइडे को एसएसटी का गूगल फॉर्म का टेस्ट कब होने वाला है, फ्राइडे को होने वाला है ना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, यू कैन आस्क मी टुमारो। हम आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। आपका थर्सडे, शिवांशु प्लीज सिट प्रॉपर्ली। यस, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। ओके, कोई भी डाउट है, कुछ भी आप कल पूछ सकते हैं, और कल भी हम इस चैप्टर की पीडीएफ करेंगे। ओके, एनी डाउट, एनीबॉडी हैव एनी डाउट?